थैंक यू एंड नमस्कार। पहले तो तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब इतनी भारी मात्रा में आए हैं आज हमारी फिल्म के लिए, तो उसके लिए आपके लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल्सो तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने हमारी प्रेम कहानी को इतना सारा प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, एंड वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड विद ऑल द लव दैट इज कमिंग आवर वे। ऐसा हुआ है कि आज की शुरुआत हम एक्चुअली एक ऑस्पिशियस वे से करना चाहते हैं। आप जैसे जानते हैं, जिन्होंने भी पिक्चर देखी है, वो फिल्म का जो अंत है वो उनकी शादी होती है फिल्म में, और हमने बहुत प्रेम, इनफैक्ट इसमें भी एक कहानी है, आलिया और रणबीर की शादी हुई थी और फिर 4 दिन बाद हमारी सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे आलिया और रणवीर की। तो आलिया उस हफ्ते 2 बार शादी कर चुकी थी, एक लिटरली रियल लाइफ और एक रियल लाइफ। और शादी की मेहंदी जो आलिया की है वो एक्चुअली इस फिल्म में जो थी वो सेम थी, अपनी शादी की मेहंदी, उसको बस डार्कन किया था हमने। और हम जाके जैसलमेर में हमने वो गाना हमने दर्शाया, पिक्चराइज किया। वैभवी मर्चेंट ने इतनी खूबसूरती से उस गाने को पिक्चराइज किया। लेकिन जब लेंथ का प्रॉब्लम आने लगा, सबने कहा कि अरे 250 मिनट्स के नीचे होना चाहिए, डोंट क्रॉस 250 मिनट्स, 248 247 पे डाल दो। देन वी न्यू कि फिर हमको उस गाने को एक डब्बे में डाल देना था और रोलिंग क्रेडिट्स को फिर उसके साथ। इट ब्रोक माई हार्ट एज अ फिल्म मेकर, ट्रूली एज अ फिल्म मेकर इट हैड ब्रोकन माई हार्ट कि मैं उस गाने को अपनी पूरी ग्लोरी में सबको नहीं दिखा पाया। हम आज यही इस गाने कुड़माई को हम लॉन्च कर रहे हैं, और you will be the first to see it and then it will drop online. Ladies and gentlemen, I give you Pritam Das' favorite composition, written so beautifully by Amitabh Bhattacharya, picturized as Rocky and Rani ki shadi, and I hope you enjoy that. Before we go on, we would like to share this unit with you. ये हम जैसे मैंने कहा था, ये हमने जैसलमेर में शूट किया। कुड़माई के दिन आ गए, ऐसे लेके शादी का माहौल, एंगेजमेंट इसे कहते हैं पंजाबी में। तो कुड़माई मीन्स दैट, एंड वी आर होपिंग दैट ये जब अभी और लोगों की शादी होगी तो यही गाना बजेगा। एंड वी शॉट इट विद अ लॉट ऑफ लव। देयर वाज अ सैंड स्टॉर्म, तो थोड़ा वक्त लग गया, बट वी ट्राई टू मेक इट एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल, एंड आई वांटेड टू शो इट टू एवरीवन इन ऑल इट्स ग्लोरी। अभी तो पिक्चर में, एज आई सेड, एकदम साइड पे चला गया गाना। फॉर मी इट्स हार्ट ब्रेकिंग एज अ फिल्म मेकर, सो आई वाज very very excited to share this with everybody. I have to say, before I call the members of the cast, that I'd like to thank the entire crew that made this film possible. From Manush Nandan, our director of photography, Sohail, who does sound, all our choreographers, Vaibhavi, Farah, Ganesh, Remo, literally Eka, Manish are both our designers on the film. The entire crew, Sumit, who led the film as producer, and my AD team led by Shona, they were all absolutely game changers for us on the film. Amrita, the production designer, who's been such a spine for me right through my last 12 years. ऐसे बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं जो मैं वाकई तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा, एंड अ बिग शाउट आउट टू प्रीतम एंड अमिताभ, जिन्होंने एंड तक, बैकग्राउंड म्यूजिक के एंड तक, लिटरली वी वर डिलीवरिंग इट राइट टिल द एंड, वो थोड़े छोटे चेंजेस कर रहे थे टू द फिल्म जस्ट टू मेक श्योर दैट द व्यूइंग एक्सपीरियंस वाज मोर प्लेजरेबल. So I hope I've mentioned everyone's names. I'm going blank in my head now because I'm kind of overwhelmed, but thank you to this cast and crew that have made this film so special for me in my 25th year. And again, a huge sense of gratitude to the members of the media, to columnists and critics and all members of the media. I have never received this kind of abundant love in my career. I've never known to be a critic's darling, but the day Anurag Kashyap called me and said he saw the film twice, I realized कि कुछ तो बनाया होगा कि that I got a call from him and so many filmmakers and members of the industry. I mean, like, this whole week has been like a fuzzy feeling of love in my heart. जब भी सोचता हूँ तो कभी-कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, that I can't believe I'm receiving this kind of love. The beginning of this film was 2 telephonic conversations I had. जैसे कि आप जानते थे, हम तख्त बना रहे थे और फिर पैंडेमिक आ गया और तख्त को हमने momentarily we kept it aside because इतनी बड़ी फिल्म थी और पैंडेमिक के दौर में उस फिल्म को बनाना was not technically possible. तो मैं एक्चुअली रोज़ 2 ही महीने मैं अपने कमरे में बैठता था, लॉकडाउन का वक्त था, और मैंने ये कहानी का जस्ट ढांचा लिखा
Then, of course, it was brought together by the brilliance of Shashank Khaitan, Ishita Moitra, and Sumit Roy, and a big shout out to Somen Mishra, who governed all of them like a true rock star. They wrote the film, but the adjourn came and I had 2 telephonic chats. I called Rocky and Rani, Ranveer Singh, Alia Bhatt, and I said, look, I don't have much of the story. I just have a tiny germ. Are you guys on for it? Literally, that's all it took. They were like, we're on. We're doing this film. Let's do it. Write it fast. And it was that simple. It was that easy. Alia तो है ही घर की बेटी, धर्मा की बेटी, लेकिन रणवीर के साथ मेरा प्रोफेशनल रिश्ता पहली बार जुड़ रहा था. And I will always be grateful to them for actually coming on board to this film on pure conviction and pure regard for just what they thought we were going to achieve with the film. I'd like to call her first. मैं हमेशा कहता हूँ कि उसका जो emotional launch इस आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट का इमोशनल लॉन्च स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, लेकिन उनका प्रोफेशनल लॉन्च हाईवे था. और उसके बाद जो वो हाईवे पे निकली, फिर कहीं और वो गई भी नहीं. वो सीधे सीधे चलती रही with performance after performance, winning over audiences' hearts worldwide. When I directed her, मैं भूल गया था कि ये वही आलिया भट्ट थी जिसने शनाया का किरदार निभाया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर में. मैं उसे ऑ के साथ देखता था मॉनिटर पे. ये क्या कमाल की एक्टर है, कैसे, किसने सिखाया ऐसे? मैंने तो नहीं सिखाया, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले सकता. ये इतनी एक्ट्रेस, ऐसी बेहतरीन एक्ट्रेस कैसे बन गई? एंड शी वाज जस्ट amazing for me as a filmmaker to collaborate with. Please put your hands together for the only Rani of my life and now the Rani of the industry and will remain Alia Bhatt. Before we ask you something, let's call the boombox boy. अभी आप सब रणवीर से मिले हैं. वो पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ था, पता नहीं अभी भी क्या खाता है, लेकिन शायद ही मैं और ये आलिया ये भी सहमत होगी, pun intended, कि there is nobody who brings that kind of energy on a film set that Ranveer Singh comes with. और मैं इसके पहले मैंने रणबीर के साथ काम किया था, जो एक्चुअली बहुत ही काम, कंपोज्ड और अपनी खुद की एनर्जी लेके सेट पे आ जाता था ड्यूरिंग ए दिल. इसमें मुझे एक दिन का कल्चर शॉक लग गया. देन आई रियलाइज्ड कि ये सारी जो मेहनत वो करता है, वो सारा जो वो जोश और जुनून ले आता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को इनहैंस करने के लिए ले आता है. इस किस्म की एनर्जी ना मैंने देखी है, ना मैं देखूंगा. बट आई न्यू वन थिंग, he was the most indispensable character in Rocky और रानी की प्रेम कहानी. There would be no Rocky Randhawa if there wasn't Ranveer Singh. Ladies and gentlemen, put your hands together for Ranveer Singh. Ranveer Singh, ladies and gentlemen, जैसा I said, हमारा boom box boy है. जहां आता है बड़ा सा boom box लेके आता है, उससे भी बड़ा दिल. Ranveer Singh, Alia Bhatt, Rocky और रानी और इनकी प्रेम कहानी. Now I will give it over to them. They have to invite members of their family. So I'll go first. रानी का किरदार और मेरा पार्ट would not have been possible without the authenticity of my family. और जिस दिन करण ने मुझे बताया था कि मेरे माँ और मेरे बाबा और मेरी ठाकुमा का के किरदार कौन निभाने वाले हैं, I knew that day onwards that चलो मेरा काम तो बहुत आसान हो गया. So I would, without further ado, like to bring on stage two very, very, very special artists and the heart and soul of the Chatterjee family. Churni ma'am, Amar Ma, and Tota sir, Amar Baba. पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार. देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे स्टेज और माइक मत ही दिया करो. कुछ भी हो सकता, अब कुछ भी हो सकता है. बस मैं इतना कहना चाहूँगा आप सबको यहाँ देखे आज. आई एम सो हैप्पी, मानो जैसे हैप्पीनेस के फुहारे छूट रहे हैं, बाय गॉड. और all the more happiness because now I have the great honor and privilege to introduce most wonderful members of our ensemble. People who are very, very dear to my heart. You've seen the film, and without much further ado, I would like to call on stage Poonam, my mummy, played by Shiti Jog. Anjali Anand plays Golu, my sister, and Amir Bashir, who plays my father. Is he here?
Amir is not here. Jayaji is not here. Yeah. But even so, Ma, I am so happy. You are very happy, and I'd like to now take this opportunity to call our collaborators and the spine of our company. Our collaborators, Viacom, have been great partners, and I'd love to invite Mr. Ajit Andhare on stage, please. Like, one of my biggest items on my dream and bucket list were realized when I cast this legendary actor. I remember going to his house and meeting him, and as well trained by my parents, my immediate instinct is to go and touch his feet, which I do till today. And he looked at me, he asked me the story, and at the end of that meeting, I was very nervous because I knew he was such a critical part of what I wanted for the film. And I said, oh God, I hope and pray he says yes. And lo and behold, he looked at me, he said, मैं picture करना चाहता हूँ, ये character मुझे बहुत पसंद आया है. And I looked at him and I said, Dharamji, I'm blessed for life that you will be in our film. And with love in all our collective hearts, with utmost respect, regard, reverence for this man who is unstoppable even today and has the charisma to unmatchable charisma. Literally, please welcome. So, I always say that at Dharma, we really had the privilege and the good fortune of making many wonderful movies. But very rarely do you come across a film that you make that gives you the critical success and the commercial success in equal measure. So I think there's deep gratitude from all of us for what the kind of love this film has got. And on a personal note, I'm going to tell Karan, you can't take such a long break for the next film. We need to go to the cinemas more often and laugh and smile. See, first of all, before I answer that, I want to say that the legend, and there are many legends out here, but the legend that Karan already is, even before this film, with his filmography, he didn't need to prove anything to anyone. But that is the nature of an artist. He wants to burn. And I've seen him now, through this making of this film, how he was consumed with this test that he put onto himself to prove himself to himself. So Karan, you don't need to do this. You are there, the film is there, but I think it's the result of that passion, that the love that's coming from all over. Like, we talk about numbers, and at our studios also, there's so many films we do. I don't think I've seen in a very long time the kind of unified reaction. I have not come across anyone who's yet to say, "Haan, theek thi ya maza nahi aaya." Everybody has loved the film. And I think that's such a source of satisfaction for all of us. And I think it's all his passion which is doing this. This was an important film for us because Gehraiyan, Jug Jug, Govinda Mera Naam, but this was really the Kohinoor in our partnership. And who doesn't want Kohinoor to shine, and how well it has shown. So thank you, Karan. Thank you, all of you all. Wonderful cast, and I think all the love that's coming your way is fully deserved, and enjoy this. It's all yours. Thank you. I think जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उससे तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं मैम, और ऑलरेडी आई थिंक हमारी सिनेमा में इंटरनेशनली और नेशनली दोनों अभी ऐसा हम डिवाइड ही नहीं करते एनी मोर के मेल सेंट्रिक, फीमेल सेंट्रिक, हीरो सेंट्रिक, हेरोइन सेंट्रिक. सब जानते हैं कि औरतों का जो कंट्रीब्यूशन वो चाहे बड़े पर्दे पर हो या बड़े पर्दे के पीछे हो, हैज़ बिन equal, if not more, to the men, and more power to the women who have contributed so deeply to cinema. इस टोटा और रणवीर का जो नाच था, वो कथक परफॉर्मेंस थी on Dola Re Dola, is not only a homage to Mr. Sanjay Leela Bhansali, but also a homage to the fact कि हुनर का कोई जेंडर नहीं होता. और ये हमने टोटा द्वारा ऑलरेडी ये बात हमने बहुत ही साधारण लफ्ज़ों में कहा था, और दैट इज़ माई बिलीफ एंड दैट इज़ द बिलीफ ऑफ द राइटर्स. और ये हम कहना चाहते थे कि वाकई हुनर का कोई जेंडर नहीं होता, एंड इन बस उसी एक लाइन में वो पूरी बात समझ आ जाती है. थैंक यू मैम फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन, एंड आई होप यू वॉच द फिल्म अगेन. देखिए, जाहिर है कि जो भी निर्देशक होता है या लेखक होता है, वो अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं कुछ छांट के बड़े पर्दे पे डाल ही देता है. और ऐसी बहुत सारे किरदार हैं इस फिल्म में, चाहे वो टोटा का हो या अंजलि का हो. इन दोनों दौर से मैं खुद गुजर चुका हूँ. जहाँ तक परिवार की बात आप कर रहे हैं, तो धर्म जी का एक लाइन है जो मेरा बिलीफ है कि घर नहीं तोड़ते. जब धर्म जी की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, और वो एक लाइन मेरी फैमिली और वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करता है कि घर नहीं तोड़ते. नो मैटर व्हाट यू ट्राई एंड होल्ड ऑन टू फैमिली. एंड आई थिंक
उन्हीं अल्फाजों में मैंने अपनी भावनाएं डाल दी है. So of course दिल के भी करीब है और मेरे भावनाओं के भी करीब है. I don't know. That's not for me to say. But yeah, I'm glad that amongst various Delhi boys that I've played, I'm able to find something different to offer with every character. So that's very fulfilling and heartening to learn from the audience's reaction to the film and the character and the performance. She loved it. Actually, it was one of the most memorable and fulfilling movie watching experiences of my life. I took her on a Saturday night to watch Rocky or Rani ki Prem Kahani. It was just the two of us sitting in the last row on recliners. And I had seen the film already. So I was really just there for her reaction. And she was laughing, she was crying, she was clapping, whistling, and oftentimes turning to me and saying, oh. So yeah, I had the best and most fulfilling experience sitting with her and watching it. She's very, very proud of me, and I'm very happy about that. I think the best answer is just look at all the 4 films that we did together, and I think the answer is supplied by those films. I think the other thing I want to say is I've been actually very impressed with the amount of nuance and understanding. Of course, we talk about the creative aspects and his directorial, strength and all of that. But I think what has been learning for me is the amount of distribution knowledge that Karan has, and of course, Apurva, is standing next to him, supplying all the encyclopedia. But he has such a deep knowledge of which territory is supposed to do how much and all of that, that suddenly we as a team are slightly under pressure that, okay, we need to make sure our A game is there all the time, So, so I think it's been a very, very fulfilling partnership. We've learned from each other, and I hope that we'll be able to, create a lot more of work together as we go forward. Purva? I couldn't have said it better. I think it's been a tremendous association. I think they have an amazing team, and they have been standing pillar strong with us across all the films. And I really look forward to doing more work with Ajit and the Viacom team. I'm sure it's the same with all of us here. Truth be told, when a filmmaker knows he's made a good or a bad film is never a good thing. A filmmaker should never know. A filmmaker should tell his or her story in the best way possible and then hope for the very best. I could never at any point say that, yaar, kya picture banai hai maine, or like khud ko I can't like tap on my own shoulder. I can only pray that when the film is out, it gets the love that you hope for and the love that you put into the film. I was very nervous. I was very stressed. That whole Tuesday, Wednesday, Thursday prior to the release, I was on the verge of some kind of a panic attack. And literally I think, but on Friday, I think I started breathing and the oxygen started coming back. And the oxygen was the love that came from everyone, all of you and the audiences. I am the only child raised by a very progressive mother. For members of the audience who know her, Bharti being the first one I can see. But it was never a taboo topic. I've gone shopping for her to buy a bra, and it's never been a problem with me. But I do know that while I did it, there were friends who were with me who were horrified that I was actually doing this and why I wasn't designating this job to a female friend of mine to do it. And I was like, why? It's been asked by my mother, why am I sending somebody else to do it? Because my mother is now 81 years old, and when she does need something, and I am in a place that has that something, then I have to go and buy what she wants. It could be a bra, it could be any other item. For me, that felt organic, also because I knew that there is a discomfort around it. And there's a line that Chudni says, कि सदियों से वो औरतें मर्दों की चड्डियाँ घिस रही हैं, घिस घिस, और तुम एक ब्रा को नहीं टच कर सकते. And that to me was very definitive of what people feel about it. I don't know what Chudni has to say, but like that was my feeling. If we've been washing your underwear for years, for centuries, why is it that touching a woman's bra or even mentioning it becomes such a problem? But then personally, I'm not so preachy as Anjali is. And I think I gave Ranveer a very bad time that way. But of course, what has to be said has to be said. And I think we made a very strong point there because of Karan. कैप्टन ने सब कुछ बता दिया. कैप्टन अच्छा हो तो टीम खूब खेलती है फिर.
और ये कहता है कि 5 साल बाद आया हूँ करण, ये 5 साल बाद आया, 7 साल बाद आया, ये अपने जौहर दिखा कर जाएगा। मैंने जब पहले कहानी सुनी, मैं बुरी कहानियों में भी काम किया, किसी के लिए पैसे के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए, मगर जिस दिन ये कहानी सुनी मैंने, मुझे लगा ये घर घर की कहानी है। आप किसी भी कैरेक्टर को पकड़ लो, आजकल छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं घरों में। मैं एक देखता कि एक लेडी अपने बच्चे को झूला, वो अपना झुला रही है झूला और गा रही है, मैं जट्टिया मिला। मैं कहा अब ये तो रणवीर कपूर ही बनेगा। रणवीर ने जो किया है, he is really a very good actor and a very emotional person. I enjoyed every bit of my time with this unit and और क्या कहूँ मैं, अभी तो शहर में नहीं दुनिया में चर्चा है कि रानी और रॉकी और रानी की कुछ है। बहुत मज़ा आया, दोनों ने बहुत अच्छा मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ। मैं बाई चांस जा नहीं सका प्रीमियर में, बट मुझे लोगों की बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि धर्म जी आपने ऐसा ऐसा। मैंने यार ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। कुछ बाएं हाथ से करवाना हो वो भी करवा लो। और मुझे कहा करण ने कि पाजी जो आप हैं वही रहना। मैं सोचता रहा यार ये आप प्राइवेट बातें क्यों बाहर बोल रहे हो? मैं बॉबी को बताया मैंने, गुड स्टोरी एंड गॉड इज ग्रेट। और मुझे भी जब जब मौका मिलता है छक्का मार देता हूँ। देर से आता हूँ लेकिन आता हूँ। तो आप लोगों ने जो दिलों में जगह दे रखी है मुझे, ये मैं जाने नहीं दूंगा बच्चों। इसे बनाए रखूंगा, ऐसे ही बनाए रखूंगा, क्योंकि मुझे बनना नहीं आता। मैं हकीकत हूँ, जो दिल में है मन में है वो कह देता हूँ, और मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं। कि मोहब्बत आपकी न देती रोशनी गर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म मैं आपका, पहुँचता कैसे इस मकाम को। इसके लिए एक शेर बोलता हूँ। मेरा बच्चा है ये, इसके तो मैं बचपन से, मेरे बच्चे भी सब जानते हैं फैमिलीज के, कि बेरुखी से उनकी रुख न मोड़ा मैंने, जिद को इनकी जिद से अपनी तोड़ा मैंने, आई ना माथे पे शिकन जो दिल शिकनी से इनकी, मुस्कुरा कर गए लिपट एक दिन, कहते हुए बेशरम कहीं के। कुछ इस तरह का रोमांस अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैं तो जो बोलते थे, मुझे मालूम था जो मैं भी कर रहा हूँ, जो मुझे दिया गया करने को, इसमें दम है। तो जैसे भी मैं निभा गया, आप लोगों ने पसंद किया। आप मतलब आप भी सिर्फ कैमरा ही नहीं देखते, आप भी पिक्चरें भी देखते हैं। लव यू ऑल, आई एम हैप्पी because of my captain, my co-stars, my whole team. I am grateful to them. It was very nice time for me. ये blend हुआ ऐसे, इनको देख के मुझे लगता है हमारी लड़की को, प्यारी सी लड़की को, कि ये गोल्डन डेज का और आज का मिक्सचर है। कि गोल्डन डेज में हम जब लड़की को देखते थे, ये टू बी फ्रैंक, तो लड़की देखती रहती थी और देखते देखते रह जाते थे। और आर्ट भी था, लेकिन इसमें जो आर्ट है इसमें बहुत, शी इज़ वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड गर्ल एंड आई ब्लेस हर, शी शुड कंटिन्यू एंड गिव अस सम मोर गुड पिक्चर एंड रणवीर यू टू, ओके, वी नीड यू, ओके, लव यू ऑल। एनी अदर क्वेश्चन इफ देयर इज?
Well, in the initial days of rehearsal, I was a bit anxious because I've got a lot of muscle mass, babes. You know, my shoulders, chest, bicep, tricep, very big, very tight. A lot of muscle mass and density. So it was very difficult in the initial days. One had to uncondition one's body for the grace of Kathak to kind of come in. But I was getting reports that Tota sir is killing it in Kolkata. He's on it for hours a day, putting in the sweat, putting in the work. And yeah, he was doing it in Kolkata, I was doing it in Bombay. And I knew at the back of my mind that we were safe and secure because we were being choreographed by Vaibhavi ma'am. And she is an absolute stickler for absolute excellence. तो वो छोड़ती नहीं जब तक उनको जो चाहे वो मिले नहीं. So all credit to her, to the choreography team who really put us through the paces till the very last hour. And I'm so thrilled with the reaction to that moment. I've been in the cinema halls personally to witness that, and it is the most euphoric, most fulfilling and joyous feeling to see the audience's reaction to that. To the journalist thing, honestly, my first day of shoot was my introduction in the film. और जहाँ पे मेरा scene होता है मिनिस्टर जी के साथ और जो मैं अपनी बहुत ही passion के साथ बात कर रही थी उनके साथ, and I genuinely felt very comfortable doing that scene just because of how much I connected. And there is one more scene जो फिल्म में नहीं है जहाँ पे मैं actually reporting कर रही थी, उसमें मेरे को बहुत मज़ा आया. I don't know whether I'll make a good journalist in life, but I definitely enjoyed that a lot. काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कोई journalist ऐसे sarees नहीं पहनती है, but हाँ, they're very simple sarees. But this is Karan Johar's version of that. To answer your question about कुड़माई जो आपने अभी गाना देखा, yeah, actually it was in the same week. 4 days later जो मेरी शादी रियल लाइफ में हुई और फिर रियल लाइफ में हुई, बहुत ही अलग थी दोनों. माई होम वेडिंग वाज इन माई सिंपल वेरी लाइट साड़ी, बहुत ही ईजी था. मतलब मैं आई वाज रोमिंग अराउंड वेरी फ्रीली. हियर देयर वाज दिस हेवी लहंगा, सर पे मेरा एक का हेवी दुपट्टा. आई वाज डेफिनेटली वेरी ग्रेटफुल कि मेरा जो है शादी था बहुत ही सिंपल था, घर पे था, बिकॉज आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू दोज थिंग्स ट्वाइस. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग आई टेल यू इज जब हम फेरे ले रहे थे, रॉकी और रानी फेरे ले रहे थे, तो ऐसे उन्होंने कुछ कहा कि नहीं फिर लड़का आगे जाता है, ऐसे नहीं लड़की फिर आगे जाती है. लाइक नहीं ऐसा मैं अभी करके आई हूँ यार, मेरे को पता है लड़की आगे जाती है. So that was one funny moment. And actually that moment, if you see in the song, जब रणवीर नीचे जाता है and he puts his head ahead like that and lets me put the वरमाला on top of him, वो actually मेरे साथ हुआ था. जो पहले रणबीर को उठा दिया था और मुझे कोई उठा नहीं रहा था, मैं देखती थी कोई उठाओ यार मुझे. Then he only went on his knees and he went down and I put the वरमाला. So that was, तो काफी close हो गया सब कुछ. बिल्कुल. He loved the film. He was very into. He sat Ranveer on my left and my mother on my right and my father right next to my mother, and the four of them were just responding and reacting, and just the way Ranveer said to really see a film from your loved one's perspective. And Ranveer is very technical. He doesn't say too much. He says very little, and he just very simply said it really worked for me. It touched the heart. He was laughing. Actually, I was not going to reveal this. It was my little secret. But I was very nervous. I don't know whether it was going back to shoot after a couple of months. First time doing a full, proper lip sync song after, I think, Ishq Wala Love. Yeah, that kind of, that there was an inherent sort of nervousness in me, which I felt that I can do something more to do better. So I was discussing with Karan, and Karan said, why don't you call Shah Rukh up? Maybe he'll give you some tips. So I called him up to talk on the phone. I just want to understand from you because nobody lip syncs like you. And he said, "Tu ghar aaja. Suhana also was wanting to learn this. तो दोनों को साथ में हम ट्यूशन करेंगे, क्लास करेंगे. तो तू गाना लेके आजा." And we went and I was there for like about 2-3 hours and Suhana और मैं पूरा एक गाना गा रहे थे. There's a whole lip sync portion which Shreya has sung beautifully, जो हम अभी release करने वाले हैं, the extended version of तुम क्या मिले. हो गया release.